we studied, that is kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, and the next kingdom is of kingdom Plantae. If we see the kingdom characteristics of kingdom Plantae, it is autotrophic, in nutrition, multicellular, autotrophic in nutrition, multicellular, cell wall present, cell wall is made up from cellulose. Cell wall is made up from cellulose. Autotrophic, they prepare their food with the help of photosynthesis. But some are partially heterotrophic, not completely heterotrophic, partially heterotrophic. Just like insectivorous plants. Insectivorous plants that grow in the nitrogen deficient condition where they capture the insect. Just like Cuscuta, Amarbil, that is parasitic in nature, which is grow on the other plants. Plantae include different groups, just like algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm, and angiosperm. It includes algae, bryophyte, pteridophytes, gymnosperm, and angiosperm. We cannot study together all these groups. So, for the study of this Plantae kingdom, we will study in the next chapter the characteristics of algae, bryophyte, pteridophytes, gymnosperm, and angiosperm. We cannot study together all the different characteristics of all these groups. That's why in our syllabus placed another chapter that is of that contain algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, and angiosperms. Now, the last kingdom is of kingdom Animalia. That is the kingdom Animalia. It include all the animals. Animalia kingdom include all the animals. That is heterotrophic in nutrition, heterotrophic होता है, multicellular, cell wall absent, storage food material, that is glycogen. But in Plantae it is of that is starch. In Plantae that storage food material is of starch, but in Animalia storage food material of glycogen. Body is complex. Yeah, body complexity is there. Your body complexity present means body organized, different types of body organization present, that is cellular level, tissue level, organ system level. So it is again divided into different phylums. That Animalia kingdom divided into different phylum.
So we cannot study all the phylum together in this chapter. That's why for Animalia kingdom, again another chapter is mentioned in our books, that is the kingdom Animalia, in which phylum Porifera, Coelenterata, Esculenthes, Platyhelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, all these different phylum we will study. But here only we studied the main characteristics of Animalia kingdom, for which we classify the Animalia kingdom with these another 4 kingdoms. So heterotrophic nutrition, multicellular, cell wall absent, storage food material, glycogen, or body complex, or complex body organization is complex. Different types of organization present in the Animalia kingdoms. That next is of virus. Virus is not included by the R.H. Whitaker in his 5 kingdom classification. ये उन्होंने इंक्लूड नहीं किया था, बट वी कैन नॉट लीव इट विदाउट स्टडी ऑफ वायरस. द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज इनकम्प्लीट. Nowadays, single virus completely affect the whole world. Complete world को affect कर रहा है. That is coronavirus. Everywhere it is spreads. So we cannot leave it. We have to study. The virus word derived from virus. Virus. That means poisonous liquid. Poisonous liquid, and study of virus is known as virology. Study of virus, that is known as virology, and term given by the Louis Pasteur. Louis Pasteur ने ये वायरस टर्म दी थी. सबसे फर्स्ट टाइम जो वायरस फाइंड आउट किया था, दैट इज ऑफ TMV, टोबैको mosaic virus. It was first identified virus, that is the tobacco mosaic virus. We cannot say it is the living things or living material. Virus living material नहीं होता. It is the connecting links between living and non-living. It is the connecting link between the living and non-living, because it does not has itself anatomy, its self particular type of different function. Cell function is not there. Just like virus, respiration is not there, reproduction is not there in the nature alone. अगर ये वायरस नेचर में अकेला पड़ा हुआ तो इसके कोई फंक्शन नहीं है. एज ए इनएक्टिव या नॉन लिविंग मटेरियल के जैसे होगा. इट विल बी एक्टिवेटेड व्हेन इट विल बी एंटर इनटू द लिविंग ऑर्गेनिज्म. किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, जब ये एंटर करेगा तभी ये जाकर के एक्टिवेट होगा. अनदर इसका कोई मतलब नहीं है. इसकी नेचर क्या होती है? इट इज स्मॉलेस्ट ए ग्रेन्युलर सब्सटेंस. स्मॉलेस्ट ग्रेन्युलर सब्सटेंस. स्मॉलेस्ट granular substance. It not contain, it not cultured. Cultured on culture medium, artificial. It not cultured on artificial कल्चर मीडियम. कल्चर मीडियम को के ऊपर इसको आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पे इसको कल्चर नहीं किया जा सकता है. सो इट इज प्रेजेंट इन द नेचर एज ए नॉन लिविंग थिंग्स. इट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट. ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी which is completely depend upon the any other living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये डिपेंड होता है. ये नेचर में है तो ये एज ए नॉन लिविंग के जैसे वर्क करता है. एंड इट इज मल्टीप्लाई ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म. मल्टीप्लाई ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म.
ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है, केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मल्टीप्लाई कर सकता है, बाकी ये अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, इट इज न्यूक्लियोप्रोटीन। It is of nucleoprotein. It is not affected by the antibiotics. Antibiotics का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसकी कोई खुद की सेल्फ एनाटॉमी नहीं होती है, ये सेल्फ कोई फंक्शनल नहीं होते हैं इसकी, ये सारे फंक्शन कंट्रोल करता होस्ट सेल के, जिसकी वजह से ये इसकी क्या कहते हैं एंटीबायोटिक का इस पे असर नहीं होता है। नॉर्मली दैट वायरस इज मेड अप फ्रॉम टू थिंग्स, दैट इज प्रोटीन कोट and another one is of genetic material. Virus is made up from protein coat and genetic material. This is of protein coat. This is a protein coat, and unit of protein coat is known as capsid. इसकी यूनिट जो छोटी छोटी यूनिट ऑफ कैप्सिड होती है, और इनसाइड द प्रोटीन कोड जेनेटिक मटेरियल इज देयर, दैट इज मे बी आरएनए और डीएनए, कोई सा भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है इसके अंदर, आरएनए और डीएनए, और कुछ भी नहीं होता। तो ये नेचर में होता है, नॉन लिविंग के जैसे वर्क करता है, जैसे ही होस्ट के अंदर जाता है वहां पर ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है, वहां जाकर के होस्ट सेल को, न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है, और उस सेल को फिर अपने अकॉर्डिंग फंक्शन करने के लिए जो है वो मैसेज प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन देता है। सो इट इज मेड अप फ्रॉम ओनली टू पार्ट, दैट इज प्रोटीन कोड एंड जेनेटिक मटेरियल्स। अनदर टाइप ऑफ थिंग्स दैट इज ऑफ prions. Prions, it is a particular type of protein. It is the type of protein which cause the disease in the organism. वायरस में क्या था, प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल दोनों था. Prions, it is a smaller proteinous part which cause the disease in the different organisms, that is known as prions. Like another term is virons. It is a type of only RNA or genetic material that cause disease in the organism. तो यहाँ वायरस में दोनों ही चीजें होती, प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल, परंतु वायरॉन्स में केवल that is genetic material which cause the disease, and prions, that is the type of protein which cause the disease. But all these three, if they are present in the nature, they are as a non-living matter, but they are present in the organism, they will be functional unit or function as a living organism. And one more thing is that lichen. Lichen is made up from two organisms, that is of fungus and algae. Fungus and algae, and the study of lichen is known as lichenology. Lichenology. The fungal partner is known as mycobionts, and algal partner is known as phycobionts, where algae help in the photosynthesis which contain the green pigments, and it provide shelter and water and other raw materials. So it is the lichen is the example of symbiotic association. Symbiotic means, sim means together, and bio means life. Together life. When two organisms live together and do function
बेनिफिट ऑफ ईच अदर, दो ऑर्गेनिज्म साथ आकर एक दूसरे के बेनिफिट के लिए फंक्शन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कह सकते हैं। और लाइकेन में वही होता है, फंगल और एल्गी दोनों साथ साथ आते हैं। यहाँ पर एल्गी फोटोसिंथेसिस करके फूड का प्रिपरेशन करती है और फंगस शेल्टर प्रोवाइड करती है और रॉ मटेरियल का फॉर्मेशन में रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, दैट इज द लाइकेन। सो लाइकेन इज नॉट placed also by the lichen is also not placed by the Varas Whittaker in his 5 kingdom classification. That's why we have to study here again here. If we see the economic importance of lichen, it also help in production of medicine बनाने में, it also help in the succession or formation of soil formation में help करता है। It help in the formation of pH, that is pH, not pH strip, that is we can say that is litmus paper. Litmus paper is formed by the lichen. Formation of soil, medicine बनती है litmus paper. Some lichen also utilized by the different animals for as a fodder के through वो as a edible portion और as a fodder वो यूटिलाइज भी करते हैं। तो ये लाइकेन हैज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑल्सो, स्पेशली दैट मेडिसिन, फॉर्मेशन ऑफ सोइल, लिटमस पेपर और many lichens utilized by the animals as a fodder. So this is the lichen.